Good morning to students. Now the next lecture which I will start, that is the design equation for the parallel filled pipe. इससे पीछे जो था ये कल हमने सारा कंप्लीट कर लिया था और आज हमारा जो है काम said that we have to design the equation for the parallel fillet weld, and then I will take the design equation or the strength equation for the perpendicular fillet weld. So we will start today from this lecture. So this is, I have taken the T joint here, right? T joint, that is the, ये जो belt है, that is, this is T parallel fillet weld, right? T parallel fillet weld. Now to try to understand the design equation, first I will just start from here, that the design equation for the parallel fillet weld as well as the transverse fillet weld, the design equation is different. Design equation is not same, and that is different. Why it is different? Try to understand this. This is your T, and this is your force P, and here is your force P. The force P that is applied here, and this force that is in the x direction. If you will see the plane of the belt here, if you will see the plane of the belt in the T joint. Why I have taken the T joint? Because I want to show you here that there are the different types of the plane. That is the horizontal plane, vertical plane, and there are infinite number of planes at different angles, right? So here you can see that if I will consider, this is your belt, this is your belt, this length is h and this length is h, because the length of the belts, length of the leg of the both belt, that is same. I have taken the same length for that, so that your equation for the belt, that is very simplified. I have not taken any difference here, that if this is h and this is h. Now if you consider this, suppose if you consider this one which I am showing with the blue pen, so you can say this is your horizontal plane, this is your horizontal plane, right? And this portion, this one is that is your vertical plane, this is your horizontal plane, and this is your vertical plane, right? The force P which I have applied here, you will see that the force P that is parallel to the horizontal plane, the force P is parallel to the vertical plane, like this. Suppose if this is your vertical plane, suppose this is your vertical plane and this is your horizontal plane, and this is the force P is passing like this. If you will see that force P, this is parallel to the horizontal plane, force P here you see that is parallel to the vertical plane. And if I will take angle, right? So suppose if I take some angle here, I will take some angle, and so you can say at different planes the force is also parallel. Suppose अगर आप इसमें एक एंगल के ऊपर, ये एंगल है, एंगल के ऊपर कोई प्लेन लेते हैं, जहाँ पे कोई प्लेन लेते हैं, तो ये जो प्लेन होगा, सपोज दिस प्लेन, इस प्लेन के ऊपर भी जो फोर्स होगी, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स हियर. आई विल शो लाइक दिस. सपोज इसको इस तरीके से शो कर लेते हैं हम. Like this, suppose like this,
right? And then here, right? J जो आपका है, suppose this is your, right? तो J कौन सा प्लेन होगा अगर जहां से आप देखें, this is the belt. ये आपका vertical plane है, this is your vertical plane, and if you will see here, this is your horizontal plane, this is your horizontal plane, and this is your vertical plane, right? This is your horizontal plane, and this is your vertical plane. If suppose करो मैं जहां पे एक लेता हूं, यहाँ पे just like this, if I will take like this, तो जहां पे एक प्लेन बनेगा, सपोज करो इस तरीके से एक प्लेन बनेगा यहाँ पे, राइट? इस तरीके से एक प्लेन बनेगा, ये वाला प्लेन, दिस प्लेन, this plane, that is the plane which is making an angle theta with the vertical. This is, and such type of, there are different type of the planes here at different angles. So you can say infinite number of planes there. And if you will see the position of the, if you will see the direction of this force P, here you will see that the force P that is parallel to the vertical plane, that is parallel to the horizontal plane, and that is parallel to the inclined plane, means are the plane which is at some angle, right? So you can say the force P that is parallel to all the planes, whether it is vertical, whether it is horizontal, or whether they are the infinite planes which are there in between horizontal and vertical plane at some different angles, right? So suppose if your force is, you can say that the force P that is parallel to all the planes, then what happens? अगर फोर्स जो है आपकी सभी प्लेन्स के ऊपर पैरेलल है, तो क्या होगा कि वहां पे कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? वहां पे शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. कौन सी स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी? शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी. अगर मैं इसको ये अपनी 2D डायग्राम ड्रा करता हूं इस तरीके से, suppose if I will take like this diagram, this is the diagram of the belt, right? So this is your belt, this height is h, this height is h, right? And this angle is 45 degree, because actually the belt which is here, it is just like a parabolic shape, right? It is just like a parabolic shape like this. So what we will do, this is called the reinforcement, and for reinforcement you can say that the equation which we have to drive, that is the parabolic equation. This is very actually difficult to calculate that. So what we will do in reinforcement, that is in the 90% cases, or you can say mostly in the cases that has been removed by the machining or the grinding. So mathematically we just mathematically we just assume that our belt is like this right angle triangle. Mathematically your welt, that is the mathematically your welt is the right angle triangle, right? We will assume this, that our welt is the right angle triangle, right? So this is about the concept of this. और इस केस में जो आपको जहां पे जो आपको स्ट्रेस मिलेगी, दैट इज शेयर स्ट्रेस मिलेगी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई वी आर गेटिंग द शेयर स्ट्रेस, बिकॉज द फोर्स P which is in the horizontal directions like this, that force is parallel to the horizontal plane, that force is parallel to the vertical plane, and that force is parallel to all the infinite planes, right? So when the force is parallel to all the infinite planes, it means that the shear stress will produce.
Now understand this thing. Now where is the maximum shear stress that we have to find out? कि हमारा मैक्सिमम shear stress कहां पे होगा? मैक्सिमम shear stress हमारा वहां पे होगा जहां पे हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो मिनिमम होगा. बट इफ यू विल टेक द केस ऑफ योर हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन का अगर मैं केस लेता हूं, सपोज को ये लेंथ ऑफ द बेल्ट जो है, लेंथ ऑफ द बेल्ट दिस इज योर एल, राइट, लेंथ ऑफ द बेल्ट इज योर एल. सो अगर आप मैं कहूं कि हॉरिजॉन्टल प्लेन लेता हूं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल हॉरिजॉन्टल प्लेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? दैट इज h इंटू एल, राइट. कितना होगा जी? h इंटू एल, दैट इज h इंटू एल, राइट. क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज h इंटू एल. इफ आई विल टेक लाइक दिस, राइट, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस इज इक्वल टू h इंटू एल. ऐसे ही वर्टिकल प्लेन का, जो वर्टिकल प्लेन का क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट होगा, किसका एरिया है? क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट लिख लीजिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट दिस. ऐसे ही वर्टिकल प्लेन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बेल्ट है, दिस इज इक्वल टू h इंटू एल. सो हियर यू हैव सीन that cross sectional area of the vertical plane is same, horizontal plane is same. So it means that अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारा वर्टिकल प्लेन का सेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन का सेम है, तो इसमें जो स्ट्रेस आपकी शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी वो क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी, राइट. बट अगर मैं मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया की बात करूं, तो मेरा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा? ये मेरा मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है. अगर मैं कहूं कि दिस जो है दिस थिकनेस इज टी डैश, तो इसको मैं इधर ड्रा कर लेता हूं. जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज टी डैश. तो so you can say it is like this, right? It is like this and this angle is theta. तो J आपका क्या है? This is T dash. So T dash is the minimum. T dash क्या है? Minimum thickness. और T dash हमें कहां से मिला? If I will take the minimum cross sectional, sorry, if I will take the maximum minimum cross sectional area, तो I will just take the infinite plane, right? तो infinite plane का जो cross sectional area होगा as compared to this, because it is at some angle, so it is at some angle, so इसका cross sectional area as compared to the vertical plane as well as the horizontal plane that is minimum होगा. तो मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया के करने के लिए क्या करेंगे? मैं इसकी टी डैश क्या है? मिनिमम थिकनेस, और इसको हम क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस. इसको क्या बोलते हैं? थ्रोट थिकनेस. तो थ्रोट थिकनेस के ऊपर जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा. दिस आई हैव शोन यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. नो डाउट द this force P that is parallel to the cross sectional area, so there will also be the shear stress. There will also be the shear stress, but our aim is to find out that where is the maximum shear stress, so that we can design the equation of strength for the T parallel for the parallel fillet belt. हमें जो पैरेलल फिलेट वेल्ड के लिए जो इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी या करनी है, तो हम क्या करते हैं कि जो वहां पे मैक्सिमम स्ट्रेस होगी उस पॉइंट के ऊपर, मैक्सिमम स्ट्रेस जहां पे होगी वहां पे उसको कंसिडर करके वी विल जस्ट फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेंथ. तो मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया आपका ये होगा, राइट. सो अब देखिए, अगर मैं इसको ही डायग्राम को इस तरीके से बनाता हूं. ये आपका जे है, this is the vertical edge, just like this, and this, right? So J angle आपका क्या है? This angle is theta. This angle is theta. This angle is how much? 45 degree.
तो जे एंगल कितना होगा? व्हाट इज दिस एंगल? जे आपका एंगल होगा 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री. You understand this? So this angle is 180 degree minus theta plus 45 degree. You understand this? Because we have to calculate this first. T dash की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अगर हमारे पास T dash की वैल्यू आ जाती है जहां पे आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया मिनिमम होगा, क्योंकि T dash क्या है? थ्रोट थिकनेस. इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगर हमारे पास थिकनेस की वैल्यू आ जाएगी T dash की, तो हमारे पास लेंथ तो बेल्ट की आपको पता है दैट इज सेम फॉर एवरी प्लेन. लेंथ ऑफ द बेल्ट इज सेम फॉर एवरी प्लेन, वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन और द इनफिनाइट प्लेन. तो जहां से हम मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हम निकाल सकते हैं. सो फॉर कैलकुलेटिंग द मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया, अवर फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द मिनिमम थिकनेस दैट इज T dash. So by using this equation, जहां से, because this is your belt, this is your weld, I have assumed that your weld is the right angle triangle. ये जो इसका reinforcement area इसके ऊपर होगा, that I have removed by the method of grinding or machining. And for the mathematically, for the mathematically, I have just assumed that your weld, that is a right angle triangle. Now, when the shear stress, you can say every plane will develop the shear stress, but we have to calculate the maximum shear stress. And for calculating the maximum shear stress, कहाँ पे होगा? Where the area is minimum. तो minimum cross sectional area हमें निकालना है. We have to calculate the minimum cross sectional area. So for calculating the minimum cross sectional area, just understand this. This is your triangle. Now just you consider this triangle. So apply sine rule here. Mathematics जहां पे करेंगे हम trigonometry, apply sine rule. Sine rule क्या होता है? So just see, apply sine rule. तो sine rule क्या होगा? This side divided by this sine angle. तो ये sine rule apply करेंगे तो T dash sine of 45 degree and this side divided by this angle, right? T side, this angle. So this is equal to, इसके बराबर होगा h upon, this is h. And what is the angle here? This is the angle sine of 180 degree minus theta plus 45 degree, right? So this is your, so you can say T dash upon sine 45 degree, this is h divided by sine 180 degree minus theta. This is equal to cos theta, and that is cos theta plus, sorry, not cos theta, sine 180 degree, sine theta plus 45 degree, right? Sine theta plus 45 degree. Therefore T dash किसके बराबर आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाओ. Therefore T dash, this is equal to T dash, this is equal to h into sine 45 degree plus sine theta plus 45 degree, right? Or you can say this is equal to h into sine 45 degree divided by sine a plus sine into a plus v. This is sine a cos b plus cos a sine b.
right? So that is sin theta, sin A cos B means cos 45 degree. This is, I just say this is A and this is B. Sin A, first parameter, sin cos B plus cos A, cos theta into sin 45 degree, right? So this is sin 45 degree, cos 45 degree and sin 45 degree cancel हो गया, because sin 45 degree this is 1 by root 2 and cos 45 degree this is 1 by root 2. तो ये अगर हम नीचे से कॉमन ले लेंगे, that is 1 by root 2, ऊपर भी 1 by root 2, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा. So you just get this equation. This is equal to h upon sin theta plus cos theta, right? H upon sin theta plus cos theta. This is your equation. So इसको मिटा देते हैं, यहां से इसको मिटा देते हैं. सो जहां से आपका आ गया टी डैश दिस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा प्लस cos theta, right? So in case of maxima and minima, right, for t dash is equal to maximum, for t dash is minimum, so for minimum t dash, maxima minima mathematics में पढ़ा आपने, for minimum t dash the derivative of sin theta plus cos theta, this is equal to 0, right? in maxima minimum आपने ये पढ़ा होगा, for minimum t dash को मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे कि sin theta plus cos theta that should be equal to 0. Derivative of sin theta plus cos theta that should be equal to 0. Therefore, d upon d theta of sin theta plus cos theta, this is equal to 0, right? You understand this? तो डेरिवेटिव निकाल लीजिए. This is equal to, जहां से कर लेते हैं, r cos theta minus sin theta. This is equal to 0. Derivative of sin theta is cos theta and cos theta minus sin theta. This is equal to 0. Therefore, cos theta is equal to sin theta, right? तो cos theta is equal to sin theta कब होता है? जब आपका when theta is 45 degree. जब आपका थीटा जो है क्या होगा? 45 डिग्री होगा, तो तब cos theta is equal to sin theta होगा. You understand this? So therefore, अब t डैश क्या आएगा? h अपॉन, इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर लीजिए आप, दैट इज sin 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री. दिस इज इक्वल टू h अपॉन 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2, राइट? So this is equal to h upon root 2. This is equal to h upon root 2. Therefore, t dash this is equal to root 2 का क्या होता है? root 2 का आप लिखिए. This is 0.707 root 2. This is equal to 0.707 into h. 0.707 into h, right? So this is the minimum thickness. This is the minimum thickness, or you can say this is the equation of the throat thickness. Throat thickness का जो equation है, जो formula है, that is t dash is equal to 0.707 into h. You understand this? जहां तक clear है? क्या किया मैंने? What I have done?
first I have started the problem that there are the three different planes. I have just taken the T-weld joint, I have taken that. So in that case, when the force T is applying like this, so you will see here there are the different types of the planes there. That is one horizontal plane, vertical plane in the belt. I am talking about the belt. So there is one horizontal plane, there is a vertical plane, and there are the different infinite number of planes at various different angles between the plane horizontal and vertical. अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बीच में हम डिफरेंट एंगल्स के ऊपर प्लेन खींचे, प्लेन को ड्रा करें, तो यू विल गेट द नंबर ऑफ इनफिनाइट प्लेन्स देयर. बट प्रैक्टिकली इफ यू विल सी, ये आपका इस तरीके से है. दिस इज योर हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज योर वर्टिकल, एंड द फोर्स इज पासिंग लाइक दिस, राइट? फोर्स इज पासिंग लाइक दिस. So here you will see this force is passing like this. This force is parallel to the vertical plane, and this force is also parallel to the horizontal plane, right? And this force is also parallel to all the different infinite number of planes which are in between the horizontal and vertical plane, right? तो ये जो force है, ये सारे planes, जितने भी planes हैं, उनके ऊपर क्या है? Parallel है. You understand this? When the force is parallel, it means force is same, force is parallel, and force is same, force is equal. What it is, you can say, तो अगर आपकी force parallel है the different plane, तो कौन सी stress produce होगी? You will get the shear stress. Now the question is कि if I will take the horizontal plane, तो horizontal plane में जो cross sectional area of the belt होगा, this is equal to H into L. Horizontal plane का cross sectional area of the belt is equal to H into L. You understand this? H is the thickness and L is the length of the belt. Cross section area of the vertical plane, that is also equal to H into L, because I have taken the both the legs of the belt are equal, H into L. So in horizontal plane as well as in vertical plane, the value of shear stress is same, because the cross sectional area of the horizontal plane and the vertical plane is same. You understand this? Now come to the point of the infinite plane. तो infinite plane जो होगा वो at some different angle होगा इसके ऊपर, तो इसलिए उसकी लेंथ जो लेंथ होगी बेल्ट की वो h के बराबर नहीं होगी, बट वो क्या होगी? उससे कम होगी. Let I will say that length is equal to your thickness, that is equal to T dash. That is the minimum thickness I have taken. Suppose T dash is the thickness I have taken. So that T dash thickness, that is entirely different or less than that of the thickness of H and H. You understand this? Now I have drawn this triangle like this. ये बेल्ट की पोजीशन थी, ये आपका बेल्ट है. This is your belt, and I have just modeled the belt like that right angle triangle, right? तो जहां पे आपका इसने वर्टिकल के साथ ये एंगल थीटा बनाया, ये एंगल आपका 45 डिग्री है, बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. दिस इज आल्सो 45 डिग्री, बट वी डोंट रिक्वायर दिस, राइट? तो ये एंगल आपका थीटा है इसके साथ. दिस एंगल इज 45 डिग्री. तो जैसे ये मैंने सेपरेट ड्रा किया, तो ये एंगल हो गया आपका 180 माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री. Now to find out the value of T dash, हमें मिनिमम थिकनेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. So we have applied the sine rule here in this small triangle. और साइन रूल आपका क्या होता है? साइन रूल आपका होता है कि थिकनेस जो भी लेंथ ऑफ दिस साइड होगी, that is divided by the opposite angle, sine angle. You understand this? सो साइन रूल मैंने अप्लाई किया, तो साइन रूल हो गया आपका T डैश डिवाइडेड बाय साइन 45 डिग्री एंड H डिवाइडेड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस 45 डिग्री. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग, सो यू विल गेट, after you can say calculating, or after the calculation you will get the T dash, this is equal to H upon sin theta plus cos theta. Here I have used the law of maxima and minimum. और in maxima minima क्या है? For the thickness of this,
the derivative of this that should be equal to 0. मिनिमम थिकनेस के लिए जो डेरिवेटिव होगा मैक्सिमम मिनिमा के अकॉर्डिंग दैट शुड बी इक्वल टू 0. So for minimum t dash, the derivative of what is the derivative of this? Sin theta plus cos theta, that should be equal to 0. I have taken the derivative and calculate the value of angle theta. कि किस एंगल के ऊपर ये प्लेन आपका इंक्लाइन था. So theta की वैल्यू I have calculated, that is 45 degree. Theta आपका कितना आया? That is 45 degree, and then I have substituted here, and you will get the value of minimum thickness t dash, right? Now, tau max क्या होगा? जहां तक क्लियर है इसको मैं रब कर लेता हूं. So now the tau max is tau max, that is minimum cross sectional tau max, this is equal to P upon minimum cross sectional area. Therefore tau max P upon T dash into L. You understand this? So what is your T dash? That is मैं अभी calculate किया, or you can say tau max, this is equal to P upon 0.707 into H into L, right? T dash की क्या वैल्यू थी? T dash की भी वैल्यू निकाली. T dash is equal to क्या था? 0.707 into H. यही कैलकुलेट किया ना मैंने. So this value I have substituted here. Therefore the design equation of strength, this is equal to 0.707 into H into L into tau max, right? This is the design equation of the strength for the single weld only. Here I have taken single weld. When there are double weld, so means it you will multiply this equation for, this is for single weld. So for double parallel weld, for single parallel weld लिख लीजिए आप. So double parallel weld, your equation P is equal to 2 into 0.707 into H into L into tau max. You understand this? So this is the equation of the double parallel filled weld. This is for double parallel filled weld and this is for single parallel filled weld. I think this is very much clear to you. I have explained it twice. So there is not much, you can say, complication there. There is only one point to understand, that in case of parallel fillet weld, the force which is passing through, or the force which we have applied, that force is parallel to the horizontal plane, that force is parallel to the vertical plane, and that force is parallel to any infinite plane between horizontal and vertical, which is made at some different angles, right? So when the force is acting parallel to all the planes, so it means that the stress which will develop there, that is the shear stress, and rest I have just calculated this. So I think this is very much clear to you. Now the next one, just see. So now the next one is
unsymmetrical parallel double filled belt. This is also very important concept. So our next concept is unsymmetrical parallel double filled belt. Unsymmetrical parallel double filled belt. What does it mean? Actually, what you have seen in the problems there, that suppose this is your plate number 1. First, I want to draw the diagram so that you can understand it well. This is your plate number 1, right? This is your plate number 1, and here is your plate number 2, and here is, so this is your, I think this is your plate number 2, this is your plate number 2, right? This is your plate number 1 and this is your plate number 2. So this is the point, center line. This is the centroid of the plate, right? ये क्या है? Centroid of the plate है. And these are the belts. These belts are having the equal length. ये double parallel belt होंगे, and these are having the equal length like this. So this is having the equal length. You understand this? Now, the point is, okay, why we require the unsymmetrical parallel double filled belt? This is actually, we do mostly the problems like this. The belt in one side and the both side, that should be same one. But in some cases, we come to know that the belt on the both sides are not same. They are readjusted in such a way that they are having the different length of the belts. Why it is so? ऐसा क्यों हुआ? Why it is so? Why we have reduced the length of one belt or increased the length of one belt? Why we have done like this? Just understand the concept here. तो जहां पे था, but here मैं ये करता हूं, this is your force, this is your force P, this is your force P, this is the line of action of the force P. So here you have seen that the line of action of the force P, that is not exactly passing through the centroid of the plate, that is passing below to the centroid, or you can say bottom, at some distance from the bottom of the plate, that is not exactly at the centroid. So in this case, what happens? These belts are equally in length. First condition, case number 1, the belts are equal in length. Case 1 क्या है? Belts are equal, belts are equal in length. Belt की जो length है, that is same. You understand this? Now consider one plate here. हम क्या करें? एक consider plate को consider करते हैं, one plate. So as you know, when the force is not passing through the centroid, it is passing at some distance. This I have already cleared you in my previous lecture. What happens that, so this distance and this distance, this is equal to E. So means the force is passing at distance E from the centroid. So what happens there? The moment
will create, or movement will develop here. So when the movement will develp, it means that it will add the stress, it will increase the stress, because already we are getting the stress, the load which is we are applying here, and in addition to that, here the movement will also develop. That will also increase the that will also increase the stress. So you can say that in this case, what happens, that the stress will increase, or you can say stress is having the maximum value. So इसका क्या रीजन, इसका क्या होगा? अगर इसकी स्ट्रेस ज्यादा होगी, what happens? Our joint that will be weakened. उसका हमारा जो जॉइंट होगा वो क्या होगा? That will be weakened, कमजोर हो जाएगा, that will be weakened. You understand this? So in order to avoid the movement, or you can say in order to avoid the additional stress, in order to avoid the movement, what we do, we just readjust the length of the welds so that the force or the line of action of the force will pass through the CG, centroid of the plate. You understand this? हम क्या करेंगे कि इसको क्या करेंगे कि इसकी लेंथ, जो वेल्ड की लेंथ है, उसको हम इस तरीके से रीएडजस्ट करेंगे. जहां पे देखा आपने कि लेंथ दोनों का बराबर था, दिस इज L and this is L. What in second case, what we will do, मैं इसकी डायग्राम ड्रा कर देता हूं. So in second case, this is your plate number 1. So this is your plate number 1, and red color say I will draw the plate number 2. So this is your plate number, this is your plate number 2, this is your plate number 1, and this is your plate number 2. तो मैंने क्या किया, ये जो मेरी फोर्स थी ये इस पॉइंट के ऊपर पहले एक्ट कर रही थी, जहां पे ये मेरा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स था. दिस इज द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स P. बट जब वेल्ड आपके बराबर थे, इक्वल थे, उस वक्त मेरा सेंट्राइड कहां पे था? उस वक्त मेरा सेंट्राइड जहां पे था, व्हेन द वेल्ड इज सेम. नाउ माय पॉइंट इज दैट आई हैव टू ब्रिंग दिस सेंट्राइड, सॉरी मेरा सेंट्राइड कहां पे था? एट दिस पॉइंट. नो माय पॉइंट इज दैट आई हैव टू ब्रिंग द centroid from this point to this point, means at the line of action of the force, so that the movement here that should be neglected or negligible. So movement को मुझे क्या करना है? What I have to do? I have to just nullify the movements here, so that additional stress that should not develop. So for that what we do, हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए इसकी जो लेंथ है बेल्ट की, इसको हम रीएडजस्ट करेंगे. जहां पे इक्वल लेंथ थी, अब ये इक्वल लेंथ नहीं रहेगी. आप कह सकते हैं ये लेंथ आपकी जहां तक है, क्योंकि हमें नीचे लाना है तो नीचे वाला बेल्ट थोड़ा बड़ा होना चाहिए, और ये लेंथ आपकी जहां तक है, राइट. So this length is L1 and this length is L2. No, both they are having the different length. Different length करने से, लेंथ इसकी बेल्ट की डिफरेंट लेंथ करने से what we have got, हमें क्या फायदा मिला? What we have got, we have adjusted this point. अब क्या होगा जी, आपका जो G जहां पे था that will shift at this point G. जो जहां पे G था ऊपर, वो अब इसके ऊपर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आ गया. अब प्रॉब्लम ये है, सपोज अगर ये डिस्टेंस इसका जहां से लेके जहां तक मैं कहता हूं y1 है, और जो डिस्टेंस आपका जहां से लेके जहां तक दूसरे बेल्ट का, दिस इज y2, राइट. एंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट इज L1 एंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट इज L2. अब जहां तो मैंने शो कर दिया कि एक को आपने L1 रिड्यूस किया, दूसरे के किया, और ये मेरा जो सेंट्राइड का पॉइंट था, आई हैव व्हाट हियर at the line of action of the force, right. What we have to calculate the value of L1 and L2. हमें पता होना चाहिए कि कितना L1 हमें रिड्यूस करना है, कितना हमें L2 रिड्यूस करना है,
hit and try method says that we cannot reduce the value of that. So for calculating that, we must go for some derivation, for some equations that I will drive here and you must understand that. But पहले इसका concept मैं दोबारा repeat करूंगा, you must try to understand. क्या था केस हमारा फर्स्ट था, we have taken the case number 1. ये unsymmetrical weld हमें क्यों बनाने पड़े? What is the reason why we have come to this point that the weld that should not be of equal length, that should be of the different length? Why the reason is? What is the reason? Reason is that this is actually your parallel fillet weld and the length of the weld is same, is centroid is lying here. What the point is, the force which is acting on the plates or the line of action of the force, that is not passing through CG, that is not passing through the centroid. That is the reason. For this purpose we have to adjust all the things, we have to do all the things there. Means the force is not passing through the centroid, the force is passing at some distance from the centroid or at some distance from the bottom, you can say, right? So when the force is passing at some distance, what happens? क्या होगा? The movement will develop, और movement जब develop होगा क्या होगा? वहां पे stress produce होगी, stress और add होगी, because already we are getting the stress due to this P. तो stress जो है और produce होगी. You understand this? So in order to avoid the additional stress, what we have to do? We have to nullify the effect of the movements. हमें मूवमेंट का जो इफेक्ट है उसको जीरो करना पड़ेगा, नलिफाई करना पड़ेगा. उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट रीएडजस्ट द लेंथ ऑफ द बेल्ट्स. हमें रीएडजस्ट करना पड़ेगा लेंथ ऑफ द बेल्ट्स को. वी हैव टू रीएडजस्ट द लेंथ ऑफ द बेल्ट. और सो दिस टाइप ऑफ द बेल्ट इज कॉल्ड द अनसिमेट्रिकल पैरेलल डबल फील्ड बेल्ट. So by readjusting the length of the belt, what happens that your this centroid or the line of action of the force will pass through the centroid. So जहां पे जो आपका इफेक्ट, जो मूवमेंट का इफेक्ट होगा वो क्या होगा? जीरो हो जाएगा. You understand this? तो इसलिए हमें इसको बेल्ट को हमें एडजस्ट करना पड़ा. अब पॉइंट ये है कि लेंथ तो मैंने एडजस्ट किया L1 और L2, बट L1 और L2 कितना करना चाहिए, कितना होगा? दैट आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू. तो आप इसका डेरिवेशन पार्ट देखिए, अंडरस्टैंड दिस. अब देखिए, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द. अब हमें बेल्ट्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है. मींस L1 एंड L2, राइट? हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है, L1 एंड L2. अंडरस्टैंड दिस. फॉर दिस पर्पस व्हाट वी डू, these are the two plates connected like this. Cut this plate, you can say cut this plate, right? Cut this plate from the other plate. एक प्लेट को क्या करें, दूसरी प्लेट से आप क्या करें, कट कर लें. जैसे ये है, इसको थोड़ा मैं आपको बता देता हूं. राइट, तो अगर हम एक प्लेट को, दिस इज दूसरी प्लेट से कट करता हूं. दिस इज योर P, विच इज द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेट ओनली, एंड दीज आर द बेल्ट्स. ये मेरे बेल्ट्स हैं जो मैंने राइट. इसकी लेंथ L1 है एंड दिस इज योर नंबर, वेल्ड नंबर 2. L2, राइट. दिस इज द, जब मैंने ये एडजस्ट किया, बेल्ट्स को एडजस्ट किया, तो सो दिस फोर्स इज पासिंग थ्रू P.
मैंने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, आई हैव जस्ट टेकन वन प्लेट, आई हैव जस्ट कट द बेल्ट, कट वन प्लेट फ्रॉम द अदर प्लेट। मैंने एक प्लेट को दूसरी प्लेट से कट किया एंड दिस डायग्राम आई हैव ड्रॉन फॉर वन प्लेट ओनली। तो आपने देखा कि द फोर्स P इज एक्टिंग ऑन दिस प्लेट एंड द फोर्स P इज एक्टिंग ऑन द अदर प्लेट। तो ये वाली फोर्स P तो जो जहां से चलेगी बिकॉज इट इज ऑन द अदर प्लेट, आई हैव जस्ट टेकन ओनली वन प्लेट। नाउ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट हियर, सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस, हाँ जहां से एक आप डिस्टेंस ले लीजिए, जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है दिस इज y1, और जहां से लेके जहां तक जो डिस्टेंस है this is y2, right? You understand this? When you have cut the plate and the force P is acting like this in this direction, when I have cut the plate from the other plate, so these are the two welds on this plate. एक प्लेट के ऊपर दो बेल्ट रहे, its length is L1 and L2 and it is having the distance y1 from the center, y1 and y2 from the center. You understand this? तो आप देखिए क्या होगा, जहां पे इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस फोर्स, द फोर्स P1 एंड P2 that will act on the belt are the internal force, you can say. So internal force P1 and P2 which are on the belts, that internal forces will balance the plate or will balance the force P. You understand this? क्योंकि सिर्फ एक force P है, so in order to balance the force P, we are having the two forces P1 and P2 on the belt. कौन सी forces? Internal forces. मैं लिख देता हूं. So we have P1 and P2 are the internal forces develop on the belt. P1 and P2 are the internal forces on the valves 1 and 2, right? So in order to balance this, क्या होगा कि P अगर हमें बैलेंस करना है तो क्या हमारी इक्वेशन बनेगी, अभी अब हमारी इक्वेशन होगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, राइट? दिस इज अवर इक्वेशन, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. इज देयर एनी प्रॉब्लम? व्हाट, जहां से दोबारा स्टेप को अंडरस्टैंड करें, दिस इज द बेल्ट बिटवीन द टू प्लेट्स, दीज आर द बेल्ट्स बिटवीन द टू प्लेट्स. व्हाट आई हैव डन, आई जस्ट कंसिडर वन प्लेट. So for considering the one plate, what I have done, मैंने इस तरीके से इसको क्या किया, बेल्ट को, I assume कि मैंने बेल्ट को इस तरीके से काट दिया. Now only I am having one plates which are having the two welds like this. तो ये वाली जो फोर्स थी, this is acting on the plate number 2. ये अगर प्लेट नंबर फर्स्ट, मैं फर्स्ट सेकंड कर लेता हूं, अगर ये प्लेट नंबर 2 के ऊपर दिस फोर्स इज एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो जब ये अपने इसको काटा तो ये जो फोर्स P थी वो इस प्लेट के साथ चले गई. नो वी हैव ओनली वन प्लेट एंड ऑन दैट प्लेट दीज फोर्सेस आर एक्टिंग. हमारे पास अब एक ही प्लेट थी जो मैंने रेड कलर से ड्रा की, जे उसके ऊपर बेल्ट थे, मैंने बेल्ट से इस तरीके से काटा इसको. सो दिस फोर्स P इज एक्टिंग लाइक दिस. सो इन ऑर्डर टू बैलेंस दिस फोर्स क्या होगा, ये जो बेल्ट है इनके बीच में इंटरनल फोर्सेस डेवलप होंगी P1 एंड P2, जो कि इसको क्या करेंगे, फोर्स P को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी. तो आपकी इक्वेशन बनेगी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1. तो P1 की वैल्यू मैं जानता हूं. व्हाट इज योर P1? P1 आप लिख लीजिए, P1 इज इक्वल टू, राइट ऑन द वैल्यू 0.707 इंटू H into L1 into tau max, right? यही होगा. And P2, this is 0.707 into H into L1 into tau max. You understand this? So this is the value of P1 and P2, right? You understand this?
So, or you can say that the summation of the horizontal forces that should be equal to 0, or the summation of the horizontal forces is equal. तो सिग्मा एफ एक्स आपका आया P इज इक्वल टू P1 प्लस P2. तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 0.707 इंटू H इंटू L इंटू टाउ मैक्स इफ L इज द लेंथ ऑफ द फुल बेल्ट. इस केस में जब मैं P आपका अप्लाई कर रहा था उस वक्त मैंने बेल्ट की लेंथ क्या ली थी, L. सो 0.707 इंटू H इंटू L टाउ मैक्स, दिस इज इक्वल टू 0.707 इंटू H इंटू L1 इंटू टाउ मैक्स प्लस दूसरा क्या है 0.707 into H, this is L2, this is L2 into tau max, right? तो ये सारा कैंसिल हो जाएगा आपका. तो therefore हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आएगी L इज इक्वल टू L1 प्लस L2. तो हमारा जो टोटल बेल्ट होना चाहिए इन दोनों वेल्ड्स का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए. ये तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. यू अंडरस्टैंड दिस? ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया? व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन वन प्लेट which are having the two welds there. Only one force is acting on the plate. That force is being balanced by the two internal forces which are acting on the weld, that is P1 and P2. So I have taken sigma fx, horizontal forces, summation of the horizontal forces, that is equal to 0, sigma fx equal to 0. So ये इक्वेशन बनी P is equal to P1 plus P2. You understand this? तो जहां पे मैंने P, P1 और P2 की तीनों की वैल्यूज जो थी, जो मैंने कैलकुलेट किया था पैरेलल फिल्ड बेल्ट में, अभी मैंने जो ड्राइव किया, I have just put the value there and I got the equation L is equal to L1 plus L2, right? जहां तक क्लियर है? अब देखिए दूसरा मैं मूवमेंट्स लूंगा. तो जो इसका मूवमेंट है दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू 0, सिग्मा m इज इक्वल टू 0. अब देखिए मूवमेंट क्या होगा, सिग्मा m मूवमेंट क्या होगा. J वाला जो मूवमेंट है इसका, P का जो मूवमेंट है, P इज पासिंग थ्रू द सेंट्राइड. ये आपका सेंट्राइड है, यही इसीलिए तो मैंने जिसको रीएडजस्ट करना पड़ा, इसलिए करना पड़ा कि हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स है दैट शुड कम ऑन द सेंट्राइड. So P is passing through the centroid, so the movement of P that is equal to 0, right? Movement of P that is equal to 0. तो अब देखिए तो therefore ये आएगा माइनस L1 Y1. This movement is anti-clockwise because we are taking the movement at CG, movement at G, है ना, movement at G ले रहे हैं हम. So minus L1 Y1 anti-clockwise plus this is equal to 0 plus L2 Y2 this is equal to 0. Therefore L1 Y1 this is equal to L2 Y2 and this is your equation number 2. पहली इक्वेशन हमारी क्या है, ये इक्वेशन पहली इक्वेशन क्या है, L is equal to L1 plus L2, right? This is your equation number 1. So इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके you will get some values there in the numericals. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके you will get the value of L1 and L2, that the length of the belts. So I think this is clear to you. इसमें कोई अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है you tell me. मैंने सिर्फ जहां पे क्या किया, प्लेट को मैंने कट किया और एक सिंगल प्लेट ले ली, दैट इज अलॉन्ग विद द बेल्ट्स, राइट. सिंगल प्लेट ले ली अलॉन्ग विद द बेल्ट, और उस सिंगल प्लेट के ऊपर अब जो फोर्स थी, एक तो फोर्स P एक्ट करेगी इन दैट डायरेक्शन एंड द टू इंटरनल फोर्सेस ऑन द बेल्ट P1 एंड P2. ओनली दिस इज व्हिच आई हैव गॉट इन दैट प्लेट. रेस्ट आई हैव
sigma fx equal to 0. I have just taken the sigma fx equal to 0, means the summation of the horizontal forces that should be equal to 0, because this is in order to balance these p should be equal to p1 plus p2, तभी तो ये बैलेंस होगा. तो sigma fx that should be equal to 0. तो p1 p2 की वैल्यू मैंने पुट कर ली, p की वैल्यू पुट कर ली, जो कि अभी मैंने कैलकुलेट किया पैरेलल फिल्ड वेल्ड का जो इक्वेशंस था. I have just put the value and I got this equation, L is equal to L1 plus L2. Now the second thing what I have done, I have just taken the moment at the centroid. That moment at the centroid that is also equal to 0. क्योंकि मैं मूवमेंट इसमें क्या चाहता हूं, 0 चाहता हूं. तो मूवमेंट एट सेंट्राइड दैट इज इक्वल टू 0. दिस फोर्स P दैट इज पासिंग थ्रू द सेंट्राइड, बिकॉज सेंट्राइड, तभी तो ये मैंने जो बेल्ट्स थे इनको रीएडजस्ट किया, बिकॉज आई वांट दैट द सेंट्राइड दैट शुड बी सेंट्रल ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दैट शुड लाई ऑन द line of action of the force. So the moment of this force P which is passing through the centroid that is equal to 0. Now we have got these two forces and we have to take the moment. The moment हमने लेना है at this point, so this is your anti-clockwise and this is your clockwise. Minus L1 y1 plus L2 y2, this is equal to 0. Therefore L1 y1 is equal to L2 y2 and L is equal to L1 plus L2. So these are the two equations you will get, and from here you can calculate the length of the belt, that is L1 and L2. You understand this? Right? Next इसका मैं करवा देता हूँ का आपका transverse filled belt. Now we will start the transverse filled belt. I think you are this parallel filled belt, that is very much clear. इसमें मैंने unsymmetrical belt के बारे में भी I have just given the detailed concept of that also. You must know that. तो rest आपका next रहा, this is your transverse filled belt, जिसको अभी start करते हैं. Right. So next one is transverse fillet. Transverse fillet belt. Understand? As in case of the when the two plates overlap to each other, when the two plates, plate number 1 and plate number 2 overlaps to each other, means one plate is above and the other plate is below, and both the plates are like this, right? So when the two plates overlap like this, तो क्या होगा? So there are, you can say, there is the formation, we have to weld the 4 edges in that case. You understand that? तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेंगे? 4 edges we have to weld. 2 edges they are parallel and 2 edges they are verticals. So transverse fillet weld is that weld that is the vertical weld, means the welds they are perpendicular to the line of action of the force. First point is the welds they are perpendicular to the line of action of the force, so that is called the transverse weld. You know, you understand this? जो वेल्ड आपके परपेंडिकुलर्स होंगे उन वेल्ड्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स फिल्ड वेल्ड. एंड दैट इज इन द केस ऑफ when the two plates overlaps to each other and we have to form the welds there. So you know that there are 4 number of edges we have to weld for making the joint there. 2 edges they are parallel and the 2 edges they are in the vertical position. So vertical जो edges होंगे या verticals जो weld होंगे, they are called the, so you can say, means transverse fillet weld. Transverse fillet welds are perpendicular to the load. पहला पॉइंट, ट्रांसवर्स फिल्ड वेल्ड जो होंगे वो परपेंडिकुलर टू द लोड होंगे. और दूसरा जो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन केस ऑफ you are this parallel fillet weld, you understand this thing, that is not always that the action of force that will pass through centroid. Sometimes the force will pass
below the centroid or above the centroid. So in that case, we have to readjust the welds. But in case of transverse filled weld, the equation is that the force will always pass through the centroid. So force or the load, force will always pass through, the force will always pass through the centroid. जो फोर्स होगी वो क्या होगी, सेंट्राइड से पास करेगी. यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब देखिए, ये आपका ट्रांसवर्स फील्ड वेल्ड है. योर दिस ट्रांसवर्स फील्ड वेल्ड, दिस इज योर ट्रांसवर्स फील्ड वेल्ड, दिस इज योर ट्रांसवर्स फील्ड वेल्ड लाइक दिस. इट इज द right angle triangle. This I have shown the diagram here. तो ट्रांसवर्स फील्ड वेल्ड जो है वो इस तरीके से होगा. और जो फोर्स है आपकी, ये जो फोर्स थी, फोर्स P, आप जहां पे देखेंगे फोर्स P that will act normal to the perpendicular leg and parallel to the हॉरिजॉन्टल लेग, राइट. जो फोर्स P है, जो परपेंडिकुलर लेग के ऊपर क्या एक्ट करेगी, फोर्स P विल एक्ट परपेंडिकुलर ऑन द वर्टिकल लेग एंड द हॉरिजॉन्टल, जो वर्टिकल प्लेन के ऊपर फोर्स P जो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा उसके ऊपर फोर्स जो है क्या होगी, पैरेलल होगी. सो इट मीन्स दैट इन द वर्टिकल प्लेन the force P will develop the stress. Which stress? That is the normal stress. So you can say that in vertical plane, stress is normal. Stress is normal stress. That is sigma. इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, और हॉरिजॉन्टल जो प्लेन होगा आपका, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन जो आपका स्ट्रेस होगा, जो स्ट्रेस होगा हॉरिजॉन्टल प्लेन में, वो क्या होगा, स्ट्रेस इज टाउ. यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. तो जहां पे आपको दो स्ट्रेसेस मिलेंगी, वन स्ट्रेस इज normal stress and the second stress, that is the shear stress, because the force P which you have applied to the weld here. तो अगर आप इसको, this is your 2D diagram, if you will see this diagram and you will come to know that P is perpendicular to the vertical plane and P is horizontal to the normal plane. So it means that in that case you will get the two stresses. One stress, that is the normal stress for the vertical plane, and the horizontal stress for the minimum plane. जहां तक this shear stress for the horizontal plane and the normal stress for the vertical plane. Up to this is clear. Now we have to find out the maximum stress. Where the maximum stress is here. In this case also, we will consider the plane which is neither perpendicular nor parallel. इस केस में हम क्या करेंगे, हम एक प्लेन कंसिडर करते हैं जो प्लेन आपका ना ही क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और ना ही क्या होगा, वो पैरेलल होगा, राइट. सो लाइक दिस वी विल कंसिडर दिस प्लेन. इसको थोड़ा ड्रा कर लेते हैं अच्छे तरीके से. ये आपका वर्टिकल प्लेन है बीपी एंड दिस इज योर हॉरिजॉन्टल प्लेन एचपी, राइट. तो हम एक प्लेन कंसिडर करेंगे विच इज एट एंगल थीटा विद द वर्टिकल प्लेन. एक
प्लेन कंसिडर करते हैं जो कि आपका ना ही क्या है परपेंडिकुलर है और ना ही हॉरिजॉन्टल है, दैट प्लेन ये कंसिडर करते हैं, दिस एंगल विल मेक थीटा विद दिस, राइट। सो अगर ये हम इंक्लाइन प्लेन, एक ऐसा इंक्लाइन प्लेन करते हैं जो कि ना परपेंडिकुलर है ना ही क्या है पैरेलल है, तो उसमें क्या होगा, दोनों टाइप ऑफ स्ट्रेसेस भी प्रोड्यूस होंगी, नॉर्मल स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगी और शेयर स्ट्रेस भी प्रोड्यूस होगी। और इफ आई से कि ये जो आपकी थिकनेस है, दिस इज योर टी डैश, ये आपकी मिनिमम थिकनेस है, दैट इज टी डैश इज द मिनिमम थिकनेस। सो अगर आपकी टी डैश जो है मिनिमम थिकनेस है, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो कहां पे मिनिमम होगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगा, राइट। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो आपका मिनिमम होगा कहां पे होगा, इंक्लाइन प्लेन के ऊपर होगा, जो हमने कंसिडर किया है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस जो कहां पे होगी, जहां पे होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, जस्ट लाइक दिस, this is your inclined plane, right? This is your inclined plane like this. ये आपका इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये यहाँ पे। तो ये एक ये है जो कि आपका क्या है, P है, राइट। तो ये आपकी फोर्स P है विच इज नीदर वर्टिकल nor perpendicular to the inclined plane. So what we will do, we just resolve this force P into two components, right? इस फोर्स को क्या करेंगे, हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो ये इसका जो नॉर्मल होगा, ये इसका जो नॉर्मल होगा, ये थीटा अगर है तो इसका जो नॉर्मल होगा ये आपका कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट P, नहीं सॉरी वर्टिकल कंपोनेंट P cos थीटा, एंड अलोंग द फोर्स P ये जो कंपोनेंट होगा P sin थीटा, दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट। दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट and this is the horizontal component. We have divided the force P into components because this force is on the inclined plane. So this force is neither perpendicular not vertical. So what I have done, I have just resolved this force in two components. One is the horizontal component and one is the vertical component. So horizontal component मिल लेते हैं। तो horizontal component क्या होगा, horizontal component, this is P sin theta and vertical component P cos theta. सो देयरफॉर जहां से दो कंपोनेंट में आपने क्या किया, दिस फोर्स P दैट इज रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट विच फोर्स विच इज नीदर परपेंडिकुलर नॉट पैरेलल टू दिस। सो इसमें आपका एक सिग्मा मिलेगा। तो सिग्मा कौन सा होगा, व्हाट इज योर सिग्मा, सिग्मा इज P अपॉन A, that is P cos theta, sorry, so sigma is what is your this vertical component P cos theta, that is P cos theta into area क्या होगा, T dash into L, because I have taken the minimum area T dash, this is the inclined plane on this, right, T dash into L, एंड जो आपका जो टाउ होगा, टाउ भी आपका P अपॉन A होगा, दिस इज इक्वल टू P साइन थीटा इंटू T डैश इंटू L, राइट। यू अंडरस्टैंड दिस, बट देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड दैट ऑल द बेल्ट्स, वेदर दे आर द पैरेलल फिलेट बेल्ट्स or the transverse field belts,
all the welds they will fail in shear only, right? ये एक बड़ा important point है that you must understand, you must memorize this point. Some books actually they have taken the sigma normal axis, normal stress, that they will fail on the normal stress. What actually from here you have seen that I have taken the inclined plane. I am just calculating this at the minimum thickness, and the minimum thickness that only we can get when this is inclined at some angle theta with the vertical, right? You understand this? So at this plane, if I will just calculate, so the P is neither parallel nor perpendicular. So there are the two components, that is the P sine theta and P cos theta. You understand this? So this is very important point. There I will write down this. All the filled welds. So very important note कर लो आप this point. All the filled welds parallel and transverse दोनों will fail only in shear, right? This is very important point. तो इसलिए क्या होगा हमारा, we will take tau. So therefore tau is equal to P upon P, tau is equal to P sin theta, P sin theta T dash into L, where L is the length of the belt. अब देखिए जो मैंने पीछे इक्वेशन ड्राइव की थी उसमें T डैश की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द T डैश, दैट इज इक्वल टू T dash, this is equal to H divided by T dash is equal to H upon sin theta plus cos theta. ये जो मैंने पहले डेरिवेशन किया इसमें मैंने मिनिमम थ्रोट थिकनेस की ये वैल्यू निकाली थी, T डैश इज इक्वल टू H sin theta plus cos theta, right? So substitute the value, therefore tau is equal to P sin theta, T डैश की जगह आ जाएगा H अपॉन sin theta plus cos theta and into L, और यू कैन से इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास थीटा डिवाइडेड बाई एच इंटू एल, राइट? टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कास थीटा H into L. So now we will इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम. Therefore tau is equal to P और HL, ये कॉमन आ गया आपका P into HL कॉमन. इसको आप खोल लीजिए आप, साइन ए साइन थीटा, पहले आप इसको डेरिवेट कर लो, cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस आप साइन थीटा ऐसे रहने दो, इसको आप डेरिवेटिव करो उसका साइन थीटा सो जहां तक क्लियर है, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच इंटू एल. मैं एक स्टेप बाय स्टेप नहीं मैं आपको बता पाया.
सो फॉर टाउ मैक्स, अगर आपको टाउ मैक्स निकालना है, फॉर टाउ मैक्स क्या होगा इन केस ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, dou tau upon dou theta, this is equal to 0. This, you know the equation, dou tau upon dou theta, this is equal to 0. Therefore ये आपका 0 के बराबर होना चाहिए, तो इसको हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, p into h into l, this is equal to d tau upon d theta is equal to 0, डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वल टू 0, इसको डेरिवेटिव कर लीजिए आप, तो p इंटू एच एल ले लिया, ये कर लीजिए cos थीटा इंटू साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा इंटू cos theta minus sin theta, right? And this is equal to 0. You understand this? This is equal to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए आप. Therefore, P upon H into L, this is cos theta into sin theta plus cos square theta plus sin theta into cos theta, sin theta into cos theta minus sin square theta, this is equal to 0. This is equal to P upon H into L. This is cos theta sin theta and sin theta cos theta, means 2 sin theta cos theta लिख सकते हैं आप ऐसे, 2 sin theta into cos theta plus cos square theta minus sin square theta, this is equal to 0. This is sin 2 theta and this is sin cos 2 theta. So therefore sin 2 theta minus cos 2 theta, this is equal to 0. Sin 2 theta plus cos 2 theta, sorry, sin 2 theta plus cos 2 theta, this is equal to 0. Therefore, जहां से कर ले हम tan 2 theta, this is equal to minus 1. Tan 2 theta divided by cos theta throughout tender, this is equal to tan 2 theta minus 1. तो अगर कैलकुलेट आप इस्तेमाल करें तो 2 थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री होगा, ये कैलकुलेट करके देख लीजिए. tan 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 किसके बराबर होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू, therefore 2 theta is equal to 135 degree, therefore theta is equal to 67.5 degree. You understand this? तो theta की वैल्यू हमारी 67.5 degree we have calculated. Now substitute the value of theta here, जो आपके पास इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन थी, टाउ मैक्स क्या इक्वेशन थी आपकी, टाउ मैक्स इक्वेशन थी P साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्लास cos थीटा डिवाइडेड बाई H इंटू L डिवाइडेड बाई दिस इज H इंटू L. दिस इज द इक्वेशन, राइट. इसी इक्वेशन को मैंने क्या किया था, इसी इक्वेशन को मैंने कैलकुलेट किया था, इसी इक्वेशंस के ऊपर मैंने कैलकुलेट किया. दिस इज द इक्वेशन टाउ मैक्स के लिए, दिस आई हैव डन, दिस शुड बी इक्वल टू 0. देयरफॉर टाउ मैक्स इज इक्वल टू P साइन ऑफ 67.5
5 degree, 67.5 degree into sine 67.5 cos 67.5 degree डिवाइडेड बाई h इंटू एल। तो ये आपका आएगा 0 पॉइंट, इसे आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो दिस बिकम्स योर 0.828 देयरफॉर P की वैल्यू जहां से निकालें आप, P इज इक्वल टू 0.828 इंटू h इंटू एल इंटू टाउ मैक्स, राइट। सो दिस इज, ये आपकी वैल्यू आई P की। बट हियर वी हैव टेकन लॉट ऑफ अजम्पशंस। और अगर मैं, ये आपका आ गया सपोज P ट्रांसवर्स जॉइंट, जो P आपका पैरेलल था वो वैल्यू थी 0.707 h इंटू एल इंटू टाउ मैक्स, राइट, h इंटू एल इंटू टाउ एल। तो अगर मैं रेशो इनकी लेता हूं, अगर मैं इनकी रेशो लेता हूं, रेशो ऑफ P ट्रांसवर्स डिवाइडेड बाई P ट्रांसवर्स एंड P पैरेलल, तो ये क्या आएगा 0.828 इंटू h इंटू एल इंटू टाउ मैक्स 0.707 इंटू h इंटू एल इंटू टाउ मैक्स। सो दिस इज ऑलमोस्ट 1.11 लाइक दिस, आई थिंक आएगी। इसको कैलकुलेट कर ले। दिस इज इक्वल टू 1.17 देयरफॉर P ट्रांसवर्स किसके बराबर आया 1.17 इंटू P पैरेलल फिल्ड बेल्ट, राइट। बट हियर एक्चुअली वी हैव टेकन लॉट ऑफ assumptions, राइट। जहां पे मैंने बहुत assumptions, we have taken lot of assumptions, so we will consider the value of P transverse that is equal to the P fillet weld. So P transverse भी जो आपका होगा, this is, I will take 0.707 into h into L tau max. Because why I have taken this value? We have considered lot of assumptions, so this is not the actual value. This is not the actual value of the P transverse. This is 0.828. This is not the actual values because we have taken lot of assumptions. So we will consider that the value of P transverse that is taken equal to the value of the P fillet weld, that is 0.707 into h into L into tau max. So the value is same, but the procedure is entirely different. Calculation is entirely different, right? The design equation, but we have derived, that is entirely different. So this is my lecture today that consists of this design equation of the parallel fillet weld joint, single parallel fillet weld joint, double parallel fillet weld joint, and transverse fillet weld joint. This is for the single, and if we have to taken the double transverse fillet weld joint, we have to multiply it by 2. But in both the cases, you have seen that the equation is same and the concept is almost different, but I think you understand the concept very nicely. So this is about today's lecture, and the next third lectures, that is of the eccentric loading in case of the welded joint, that we will take tomorrow morning, and it's all right then. Thank you very much.